Okay, I can see someone has joined. Please announce your name and mention Okay, where I can you've see someone has joined. Please announce your name and mention okay, where I can you've. see mention where you've joined from. It'll be easy to start the conversation. We just have one person watching us now.
unless we have the minimum quorum of 5 to 10 people, it's very difficult to go live and start a discussion. However, we'd like to keep the conversation and the discussion engaged and uh, fruitful for all of you. So I'd request people to join, or at least wait till we have minimum 5 people, so that we can start the discussion for tonight. Okay, great. 2 people listening to us right now. Thank you very much for joining the Sunday live. We are still waiting to have the complete quorum, at least the minimum quorum of 5. So please stay tuned with us. And shortly from now, once we have 5 people listening to us, we'll get started with our live. और संडे की शाम को वक्त निकाल के हमारा लाइव ज्वाइन करने के लिए जो 2 लोग अभी हमें सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द संडे लाइव. It will be great, and it will be even better if we can be more interactive in today's live. And I'd request if you can quickly mention where you have joined the live from. In the chat section, if you can mention where you are, where have you joined us from. Mention करिए अपने शहर का नाम और स्टेट का नाम जहाँ से आपने ज्वाइन किया है. It will be great to know where all our audience are based at. इन पैरेलल मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये लाइव फेसबुक पे भी ब्रॉडकास्ट हो. सो आई एम ट्राइंग टू मेक एन अटेम्प्ट, बट आई थिंक इट इज़ नॉट एज सक्सेसफुल एज इट हैज़ बीन इन ऑन यूट्यूब. यूट्यूब में द ब्रॉडकास्ट हैपनिंग ऑलरेडी. Excuse me, I have a bad throat tonight, so you'll have to put up with me clearing my throat quite often tonight. Okay, I don't see anyone interacting. Please mention where you have joined us from. It feels really good to know if our audience, where all our audience are present, and if we have any global audience who are also listening to us, then it's even better. So I can see that we are picking up momentum. 3 लोग फिलहाल सुन रहे हैं. Please mention where you have joined us from. कौन से शहर से आपने ज्वाइन किया है, कौन से स्टेट से आपने ज्वाइन किया है. प्लीज चैट में मेंशन करिए एंड वी विल कंटिन्यू दिस लाइव. आई वाज लिटिल एप्रीहेंसिव. मुझे लगा कि आज का लाइव शायद कैंसिल करना पड़े बिकॉज वी वर ऑलरेडी ऑलमोस्ट 10 minutes into the live. एक्सक्यूज मी. और मैंने भी थोड़ा लेट ही ज्वाइन किया आज.
बट आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट. मुझे लगा कि नहीं, शायद आज लोग ना आए, क्योंकि दिस इज़ अ फेस्टिव वीक. पूरा हफ्ता देर हैव बिन अ लॉट ऑफ फेस्टिविटी दैट्स बिन गोइंग अराउंड इन आवर कंट्री. सो मुझे लगा कि लोग शायद आज ज्वाइन ना करें. बट आई स्टिल वॉन्टेड टू हैव दिस लाइव बिकॉज नेक्स्ट संडे हमारा लाइव, नॉट अनफॉर्चुनेटली, बट वी आर टेकिंग अ ब्रेक. नेक्स्ट संडे will not come live next Sunday. Next Sunday, the Sunday live is not going to happen, but episodes will keep coming. हमारा लेटेस्ट एपिसोड भी आ चुका है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड इट ऑलरेडी, बट हमारा लेटेस्ट एपिसोड वाज एक्चुअली अ स्पेशल रिक्वेस्ट दैट हैड कम लॉन्ग टाइम बैक फ्रॉम वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने कहा था कि जब हमने लबूबू पे कंटेंट बनाया था एंड द कंटेंट वाज क्वाइट अ हिट, काफ़ी लोगों को, काफ़ी ऑडियंस को हमारा कंटेंट बहुत पसंद आया था. एंड दैट इज़ व्हेन वी हैड रिसीव्ड अ फीडबैक फ्रॉम वन ऑफ आवर व्यूअर्स, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि अगर हम ऐसे किसी टॉपिक पे कंटेंट बना सके जहाँ पे वी टॉक अबाउट द सडन सर्ज इन सुपरनैचुरल पॉडकास्ट्स जो हमें अभी देखने को मिल रहा है यूट्यूब पे, इसके ऊपर अगर कोई कंटेंट हम बना के ला सके. सो इट वाज अ लॉन्ग पेंडिंग रिक्वेस्ट विच वी हैव फाइनली बिन एबल टू फुलफिल. So first of all, ये content बनाने का idea, since it had come from one of our viewers, so the entire credit goes to our viewer, जिन्होंने, please excuse me, I need to drink little bit of water. गले में थोड़ा सा खराश है आज. So coming back to the story, so the credit goes to our subscriber, sorry, our viewer, जिन्होंने ये recommendation हमें दिया था. And we had put our heart and soul, as always. जो भी हम content लेके आते हैं, जो भी हम बनाते हैं, we always ensure that we put our heart and soul in it. पूरा research करते हैं content पे और फिर हम कोई content आप तक लाते हैं. So that being said, इस content पे भी हमने काफ़ी research किया है and we hope you like the content. You will see the thumbnail वो change होता रहेगा because we have put our thumbnails for A/B testing, ताकि वो ज़्यादा audience को अपील करे और ज़्यादा लोग हमारे कंटेंट को देखें. एंड इसलिए थोड़ा सा आपको कभी कभी कंटेंट सेम रहेगा हालांकि, लेकिन उसके थंबनेल्स और उसका टाइटल चेंज होते रहेगा बिकॉज वी हैव पुट द टाइटल एंड द थंबनेल फॉर A/B टेस्टिंग. बट लार्जली व्हाट यू विल बी एबल टू सी इज व्हाट you can see right now on our channel. आप अगर चैनल पे जाओगे, the most latest excuse me, video that you'll be able to see is around that, जिसका मैं आपको बता देती हूँ what's the title and thumbnail तो खैर आप देख ही लोगे. It's called Digital Supernatural Capitalism. That's the title. Please go and watch the content. अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट, डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. अगर कंटेंट अच्छा नहीं लगे, देन ऑल्सो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. हमें हमारी कमियां बताइए. ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा ही आप लोगों को बोलना पड़ेगा. यू शुड लेट अस नो वेयर वी आर लैकिंग सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट एंड ब्रिंग यू बेटर कंटेंट. ये एक. The second thing that we would request all our customers is, all our subscribers and viewers is, बहुत सारा effort जाता है एक content को बनाने के लिए. आप तो end product देखते हो ना, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत होती है, from research to investing in understanding, analysis, investment, in investigations, then उसको एक storytelling का एक look देना, then deciding how the story will be presented to you takes a lot of effort. तो हमारी यही रिक्वेस्ट होती है हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स से कि आप लोग हमारे शॉर्ट्स को बहुत प्यार देते हो. I know that with time human beings as a species is evolving, and as we are evolving our attention span is diminishing. तो हम ज़्यादा देर एक चीज़ को देख नहीं सकते हैं. ज़्यादा देर वी डोंट रिमेन. देखा जाए बोलते बोलते आई हैव लॉस्ट one viewer just now, so we were 3, now we are 2. I'll still go on. तो ऐसा होता है कि people don't watch the content, they just watch the reel और उनको लगता है कि भाई हमने रील देख के सब जान लिया. ऐसा नहीं होता है. What you see in the reel is maybe
a fraction of the entire effort that's there in the content आप देख, अगर आपको रील अच्छी लग रही है तो बेशक आपको कंटेंट भी उतना ही भाएगा, लेकिन उसके लिए आपको जाके कंटेंट देखना पड़ेगा. सो प्लीज 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 गो एंड वॉच आवर कंटेंट. कमेंट सेक्शन में डू क्रिटिसाइज. अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगे तो कंटेंट अच्छा लगे तो वो भी बताइए, और हमें ये भी बताइए कि हमसे आप और कैसी स्टोरीज सुनना चाहते हैं लाइव में जब हम आते हैं. व्हाट एल्स वुड यू लाइक अस टू ब्रिंग इन आवर द संडे लाइव्स. आज का लाइव का टॉपिक है द गिग इकोनॉमी. सो स्पीकिंग ऑफ द गिग इकोनॉमी, आई एम श्योर जो गिग बोलते ही हमारे दिमाग में जो पहला आता है, सबसे पहला जो एसोसिएट करते हैं हम टर्म विद द वर्ड गिग इज स्विगी or Ola or Uber or things like Zomato and all of that. Well, you're right. Technically, you're right. That is what gig economy is. But gig, उसको associate कर दिया है हमने with gig economy. These are brands basically. This is not what gig economy is all about. We'll talk today. Tonight's discussion in the Sunday Live is going to be on the surge of gig economy in India. My question tonight to the audience, to our viewers who are listening and watching us right now live is, do you think or do you feel that the gig economy, that the surge in gig economy that we are seeing in our country right now, जो हम increase देख रहे हैं gig economy में, yeah, gig workers में, so do you think that it is showing up, I would say, an upward trajectory of our economy? Do you think it represents an upward trajectory of our economy? This is a question to all our subscribers and viewers and listeners tonight. The chat section is open. Please comment in the chat section and let us know what your point of view is. Do you think that India is progressing with the surge in gig economy? Yes or a no kind of an answer would really help. मैं ये question अपने chat section में भी डाल देती हूँ as a open question for discussion, and I'd urge जो भी हमें सुन रहे हैं इस वक्त, please take part and respond, क्योंकि that's the only way of keeping the discussion going on. I know that आप time निकाल के हमारा live देखने आ रहे हैं, सुनने आ रहे हैं, and we are really thankful for it. But participating in the live is as much important, because it's not about me sharing my thought on what I think about a particular topic for the evening. It is about having a discussion कि हम collectively क्या सोचते हैं इसके बारे में. So with that, let me put the question in the chat for tonight. It's a simple yes or no question. Whatever you feel, please mention in the comment section. If you think it's a yes, mention it as yes. If you think it's a no, you can just write no. If you want to explain, if you want to elaborate your point of view, feel free to do so. That's the whole agenda. That's the whole point of coming live and having discussion with you all. Yeah. So while this question is open in the chat section for all of you to answer, आज रात के लाइव में और in today's Sunday live, the major points that we are going to discuss. Number one, why India's gig economy is surging. ये सबसे पहला हम discuss करेंगे. Second thing that we'll discuss in tonight's live is the history and evolution. क्या है gig economy, कहाँ से आया, India में since when have we seen gig economy kick off and since when have we seen the surge, इसके पीछे हमारी गवर्नमेंट क्या बोल रही है, नीति आयोग ने क्या क्या जर्नल्स पब्लिश किए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. We'll also talk about why this surge has happened and why have we seen a sudden rise in gig economy ever since the COVID times.
इसके अलावा we'll talk about some real life case studies in tonight's show, including the Savita's case, जो कि was also published, I think, in India Speed. We are going to throw some light on that. Benefits and harms of gig economy, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. Laws, policies, criticism. कुछ referential artifacts भी हम आपको दिखाएंगे आज के live में around gig economy, and कुछ documented case studies and cases, real life cases के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रे है, जो कि बहुत ज़्यादा डार्क है, वुड से इट्स डार्क, इट रिप्रेजेंट्स द डार्कर साइड ऑफ गिग इकोनॉमी. आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस. जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट लाइफ में, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि वी हैड इंटरव्यूड अ गिग वर्कर, राइट. हालांकि वो एपिसोड अभी भी इट्स स्टिल इन पोस्ट प्रोडक्शन, अभी भी उसकी एडिटिंग चल रही है. हम सिर्फ एक रिसोर्स के ऊपर बेस करके किसी इकोनॉमी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, या फिर किसी इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर सकते. इसीलिए वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू इंटरव्यू एटलीस्ट अ सैम्पल, जहाँ पे हम एक कलेक्टिव आपको एक ट्रू पिक्चर दिखा सके कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इन द गिग वर्ल्ड when we talk about gig economy. रियल लाइफ में इन लोगों को क्या कैसे ये लोग डे टू डे अपना वो करते हैं, हाउ डू दे कोप विथ दिस इकोनॉमी, हाउ डू दे पिक इट अप एंड लुक फॉरवर्ड टू इट एज अ means of survival, and how what are the implications of gig economy for the gig workers. इसके लिए इसको एक कलेक्टिव आउटलुक देने के लिए, एक होलिस्टिक आउटलुक देने के लिए हम और कुछ इंटरव्यूज करेंगे, एंड देन वी विल ब्रिंग दी कंप्लीट एपिसोड टू यू. ये सब एपिसोड्स बनाने के लिए, या फिर ऐसे इन्वेस्टिगेटिव एपिसोड्स बनाने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी की बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि वी रियली डू नॉट वांट पीपल टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ ट्रबल हु आर रियल लाइफ वर्कर्स इन द गिग कल्चर. इसके अलावा इसमें इस ऐसे इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव, इफ़ आई कैन यूज़ द वर्ड जर्नलिज्म, इसको करने के लिए भी वी नीड रिसोर्सेज. तो इन सब के लिए बहुत मेहनत लगती है. तो इतना मेहनत करके जब हम एपिसोड्स लाते हैं, एंड व्हेन व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स चूज लाइटर रील्स एंड लाइटर I would say lighter videos, because I know there's a lot that each one of us is dealing with in our lives, but जब आप इन videos को ओवरलुक करते हो तो थोड़ा सा तो तकलीफ होती है, बिकॉज एक जन की इसमें एफर्ट नहीं है, इट्स द एफर्ट ऑफ द एंटायर टीम दैट ब्रिंग्स दैट कंटेंट टू यू. सो प्लीज़, इतने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वी अर्ज यू टू वॉच आवर एपिसोड्स. हम कोशिश करेंगे कि वो टाइम स्टैम्प हम मेंशन करना शुरू कर दें कि एपिसोड के किस पार्ट में कौन सा वाला टॉपिक हमने कवर किया है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. हम वो नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल, बिकॉज आवर टीम इज़ वेरी 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 स्मॉल. तो अभी ये इतना डिटेलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट विल स्टिल ट्राई टू डू इट फॉर यू. Okay, let's get started with tonight's discussion. I still don't see any answers or responses coming in, but once again, please let me know if the audio and the video is clear. I don't know if I didn't even ask tonight if the audio and video was clear. Please give me a yes or a no and confirm if you all can hear me well. Give me a thumbs up, give me a yes or a no. आवाज़ आ रही है, वीडियो क्लियर है, तो एक बार चैट में प्लीज़ बता दीजिए, and we can kickstart our discussion. I'll just put it in the chat. Okay, that's a thumbs up, which means the audio is clear and the video is clear. Thank you very much. Thank you very much for the response. Great. So let's get started. Question is still open for everyone. Please take part in the discussion. आप जब respond करोगे, मुझे शायद instantaneously देखने को ना मिले responses, but I have my eyes on the screen also. Just take part whenever you feel it is time for you to take part. Feel free. So the question for tonight is, do you think the surge in gig economy indicates a growth in India's overall economy as well? Does it somewhere give that indication? With that, the first topic that we are going to talk about tonight is
some of the numbers, कुछ numbers के बारे में हम बात करेंगे कि ये numbers किस तरह से हमको एक ऐसा impression देती है कि gig economy is really really something that people are looking forward to, which is a fact. People indeed are looking forward to it. लेकिन इससे कितना benefit हो रहा है लोगों को, कितना नहीं, whether it is really fulfilling the basic necessities of life, या फिर इसके पीछे की स्ट्रगल क्या है जो हमें शायद नहीं दिखता है, इन सब के बारे में बात करेंगे. इट्स वेरी इजी when somebody comes to deliver food at your doorstep, और आप चौथे महल में रहते हो, पांचवें महल में रहते हो, पहले महल में रहते हो, पहले फ्लोर पे रहते हो, इट्स वेरी इजी टू ask them to come upstairs and give you your delivery. लेकिन हम दो बार नहीं सोचते हैं कि you are not just that one customer that they are serving, there are many others, and उनका भी जो shift timing होता है, it's very critical. It's not like a standard shift जो हमको शायद हमारे offices में देखने को मिलता है. Some of them don't even have, not some of them, none of them have got proper offices where they work from. So बहुत सारी challenges हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे लेकिन थोड़ी देर में. Okay, so getting started with tonight's discussion, the first question first, कुछ numbers जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. Starting off is a quick snapshot on the size, growth and headline numbers, yeah, which have made great headlines. कहाँ से ये headlines आई हैं? सबसे पहले तो Live Mint का there was a journal that was published in, I think, that was published in July last year, 2025, where it said India's gig economy in 2025, growth, formalization and financial inclusion explained. Yeah, India's gig economy has surged to 12 million workers in financial year 2024 to 25, driven by digital connectivity and urbanization. This shift marks a structural transformation in labor, with gig worker gaining recognition and improved access to credit, though challenges like income volatility remain. Income volatility के बारे में तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन gig economy का मतलब क्या होता है? Let's understand that. The word gig means non-temporary. ये concept बहुत ज़्यादा popular बहुत पहले से था इन द वेस्ट. वहाँ पे गिग इकोनॉमी हैज ऑलवेज बिन वन ऑफ द preferred mode of income, especially for the students. जो student quorum है in at least UK, US and the Europe, वहाँ पे आपको दिख जाएंगे gig workers. कोई McDonald's में काम कर रहा है as as a delivery partner, और वहाँ पे counter में कोई है. So they earn their living. Students हैं, उनको अपनी pocket money मिल जाती है and they are able to thrive on that. इंडिया में gig economy का concept, हालांकि institutionally and fundamentally the concept is same. Gig economy means someone who's basically a contractual employee, who is a non-permanent employee. एक stipulated time period के लिए कोई बंदा काम कर रहा है, freelancer, इन सबको gig worker बोला जाता है, including someone who is your house help. Sorry. Someone who is your house help. हालांकि हम house help को gig worker की तरह हम नहीं समझते हैं. There are a lot of by policy, by design, there are a lot of things that we do not fulfill. We'll talk about that also shortly enough from now. But the point is, these kind of work, जो कि structured और conventional काम जो हम करते हैं उससे अलग होता है, और इनकी पे स्ट्रक्चर भी अलग होती है, because you get paid on an hourly basis, or you get paid based on the task or project, whatever you are doing, that is accomplished. Now, what looks like now is in recent time, मतलब अभी का जो time है 2024-25 में, there has been a surge. 12 million workers alone in 24-25 में हमको देखने को मिला इन गिग इकोनॉमी. इंडिया में गिग इकोनॉमी इसको हमने इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसको इतना हमने कंफाइनमेंट में डाल दिया है, दैट गिग
बोलते ही हमारे दिमाग में यही आता है, डिलीवरी सर्विसेज या फिर कैब सर्विसेज। इन सब के बाहर हम सोच नहीं सकते हैं दैट व्हाट एल्स कैन गिग कंटेन। और इसी का काफ़ी हद तक आई वुड से फ़ायदा उठाते हैं दी ऑर्गेनाइजेशंस हु रन दीज काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ग्रोथ ट्रेजेक्टरी एंड प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, नीति आयोग ने प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर दिया है दैट बाय 2020 टू 2021, ये जो टाइम फ्रेम है विच इज बेसिकली द कोविड एरा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्ज देखने को मिला इन गिग वर्कर्स। क्या ये कोविड के टाइम से ही शुरू हुआ है? इफ यू आस्क मी दैट क्वेश्चन, द आंसर इज नो। नहीं, ये कोविड के टाइम पे नहीं शुरू हुआ, बट सर्ज वहां से हुआ है बेशक। This actually dates back to even prior than that. 2000 I think 12 से 17 के बीच the gig culture had kicked off in the form of, तभी कैब सर्विसेज के रूप में आती थी, या फिर छोटे मोटे जो डिलीवरी सर्विसेज है उसके रूप में आती थी ये सब गिग सर्विसेज। लेकिन धीरे धीरे it has picked up the pace, especially with giants coming into the market like gig giants coming into the market like Ola, Uber. इन्होंने एक गिग कल्चर को बहुत ज़्यादा पुश किया। ये शुरुआत मैं ये बता रही हूँ फ्रॉम 2012 टू 2017, जब हमें इस कल्चर का एक बूस्ट देखने को मिला। धीरे धीरे देयर वाज स्विगी, देयर वाज जोमेटो, उबर ईट्स, ब्लिंकिट, एंड देन द लिस्ट इट जस्ट कीप्स एक्सपैंडिंग। तो दिस इज हाउ द entire culture had started. This is how old the gig culture is here in India specifically. So नीति आयोग का जो एक आर्टिकल रिलीज हुआ है, उसमें द सेकेंड चैप्टर जो है, आई विल शेयर द लिंक आफ्टर द लाइव, आई विल शेयर द लिंक विद ऑल ऑफ यू। प्लीज गो थ्रू एटलीस्ट, इसको देखिए, पढ़िए, चैप्टर 2 को पढ़िए, यू विल अंडरस्टैंड मोर बेटर व्हाट एग्जैक्टली गिग कल्चर इज और कितना ज़्यादा एक्सपेंशन हमको देखने को मिला है। सो between 2020 and 2021, coming back to the story, the estimated rise was 7.7 million. Right? This was the projected rise. In fact, we touched it. At times we surpassed it also. 2025 तक ये 12 million तक पहुंच गया था. The prediction or the projection rather, the projection by Niti Aayog is कि 2030 तक it will reach 23.5 million. And that's a huge surge in gig economy. And there is another article also, I'll try to refer to it once I find it, jahan pe 2047 tak this will even go higher up. This will perhaps get double or close to double, kareeb 62% tak ye pahunch jayega. Gig economy, employment in gig workers will reach to that level. Question number 2 for tonight, for the audience who are listening, 3 जन हैं, but फिर भी if you are giving me your time, then I totally respect that and value it. So question number 2 for tonight is, do you think this already has raised an alarm that how people are choosing to shift from the conventional and traditional work or conventional and traditional jobs to gigs, जो कि पार्ट टाइम एंड फ्रीलांसिंग के बेसिस पे ज़्यादा होता है? डू यू थिंक इट्स एन अलार्म? क्या हमारा इज इट अ चेंज इन द माइंडसेट, या फिर इज देयर अ रियल प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन यूथ, एजुकेटेड यूथ स्पेशली, जिसकी वजह से गिग वर्कर्स में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हमको देखने को मिल रही है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुनाइट. प्लीज डू टेक पार्ट इन द क्वेश्चंस एंड प्लीज डू कीप आंसरिंग. अच्छा लगता है जब आप पार्टिसिपेट करते हो डिस्कशंस में थ्रू your responses. So it'll be great if I can get some answers on these questions that I have asked. पहले question का yes no जवाब अभी तक नहीं आया है, which is totally fine. The next question I'm going to put it in the chat once again for you all. And अगर आपको chat में मेरे questions दिख रहे हैं, then please just mention a yes, क्योंकि it's very difficult for me to tell कि आप लोग देख तो रहे हो, सुन तो रहे हो, but when you're not taking part in the discussion, मुझे लगता है कि मेरे interactions आप तक नहीं पहुंच रहे हैं शायद. अगर पहुंच रहे हैं, just reply a yes.
This is question number 2. Is the rise say, is the rise is the surge raising an alarm? This is the next question for tonight. Please do take part and mention कि क्या आपको क्या लगता है? Is this an alarm? Is this somewhere clearly कॉलिंग आउट कि हमारे देश में जो इकोनॉमी की हालत है, शायद हमको जो दिखाई जा रही है, या फिर एम्प्लॉयमेंट की जो स्टेटस है, जो हमको दिखाया जा रहा है, जो नंबर्स हम तक आ रही हैं, वर्सेस द ग्राउंड रियलिटी, देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द टू. दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है. डू यू थिंक दैट दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी? A yes or a no will help. Please do take part. And again, once again, I'm requesting, अगर आप mention कर सके आप कहाँ से सुन रहे हो, great. If you still don't want to reveal your identity, and that's totally fine with us. Okay, no responses yet, but I'm hoping कि धीरे धीरे शायद we are taking time to warm up. Last live में भी ऐसा ही हुआ था. धीरे धीरे people started opening up, questions आने लगे, लोग join करने लगे. So I think I should give that space to you all. So this is the second question for tonight. Third, अब अभी हम थोड़ा सा फिर से numbers पे चले जाते हैं. Let's discuss about the numbers a little bit. So जो numbers मैंने आपको बताए, जो आंकड़े बताए, जो predictive projection हमको दिया गया है by नीति आयोग, if it is touching the 23.5 million mark, then I personally feel it's a threat. इसका clear indication है that there is a bigger problem that our country is facing. However, we have been brushing this under the carpet, but now I think with the rise in gig workers in our country, this in itself is unearthing the skeleton somewhere. So that's that. So ये नीति आयोग के numbers थे, by the way. The next one, recent sectoral hiring spikes की अगर हम बात करें, sectoral hiring spikes, of course, in the gig culture. Blue collar, मैं बताऊंगी blue collar क्या है. Blue collar and platform hiring jumped heavily. ये report है by Work India Report and Media. To approximately 92% year-on-year rise देखने को मिल रहा है in blue collar gig jobs. Let me tell you what blue collar gig jobs are. In layman's language, if I tell you, these are those jobs that can easily be replaced by AI. हालांकि कुछ है जो शायद AI भी ना रिप्लेस कर पाए, लेकिन अभी कोशिश वो भी हो रही है. I think Amazon शायद एक प्रोजेक्ट अपना कर रहा था जहां पे वो डिलीवरी भी AI से करवाने के बारे में. So instead of a delivery person coming at your doorstep and delivering your product, you'll have a bot that will come and deliver the product. So yeah, that's where we are heading. And for companies, this is a huge saving, because unko you can beat the restriction of time. Number one, जो policies and litigations हैं, जो human एक इंसान को आप जब काम पे रखते हो, उसको फुलफिल करने के लिए जो पॉलिसी गाइडलाइंस और लॉज और बायलॉज उनको जो फॉलो करना पड़ता है, इफ यू हैव अ बॉट डिप्लॉयड देयर, आपको शायद वो लीवे भी मिल जाता है. सो दैट्स अ थ्रेट. दैट्स अ ब्लू कॉलर जॉब, बाय द वे. Basically jobs जहाँ पे it's more physical intensive work than mental. So these are your blue collar jobs. तो यहाँ पे 92% का year on year growth या rise देखने को मिल रहा है. 92% is huge, especially in a gig culture. मतलब it's very clear, either the youth no longer wants to pursue. I'm not just talking about youth. अगर आप gig economy को देखो, at least from my personal experience, I can tell you, I've seen people who have already, who are already at a retirable age, maybe 60 and over 60, they choose to become gig workers, right? That's also raising a concern, right? क्या हमारे देश में post retirement जो लाइफ होती है उसको मेंटेन करने के लिए अब हमारे सीनियर सिटीजन्स को, इफ दे हैव टू पिक अप ऑन गिग
वर्क जो कि इतना रिस्की होता है. रिस्की किस लिए होता है? बिकॉज यू हैव अ कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम. काफ़ी सारे आपको आप कितना ऑर्डर डिलीवर करते हो उसके ऊपर आपकी इंसेंटिव्स आते हैं. दैट मीन्स यू सिंपली अर्न बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ projects or assignments you are able to complete. So that's a very tough thing to do. At a relatively younger age, maybe you will be able to fulfill that because आपका खून तभी भी गर्म होता है and you are still able to fulfill that demand. But at an age where you ideally should be, हालांकि मैं आपको एक contrasting parallel भी बताऊंगी इसके बारे में थोड़ी देर में. But coming back to the discussion, at an age where you should, have a smoother retired life, वहां पे आपको gig वर्कर के हिसाब से और गिग वर्कर बनना पड़ रहा है बिकॉज सर्वाइवल के लिए आपको इट बिकम्स अ मोड ऑफ सर्वाइवल फॉर यू. दैट्स अ वेरी पेनफुल स्टेट ऑफ अफेयर दैट वी आर इन currently. But talking about, I said I'll give you a parallel also. I'll give you a contrast. So the contrast that I was trying to give you is, you go to the countries, you go to other countries in the west, वहाँ पे भी आपको सीनियर सिटीजन्स मिल जाते हैं एज गिग वर्कर्स. लेकिन वहाँ का जो वर्क कल्चर है, वहाँ का जो सिस्टम है, दे फॉलो द गाइडलाइंस, दे फॉलो द रूल्स. वहाँ पे एक मिनिमम वेज जो होता है वो देना पड़ता है. इट इज बाय लॉ, बाय द लॉ ऑफ लैंड. एक मिनिमम वेज जो होता है वो एक गिग वर्कर को एक एम्प्लॉयर has to give that minimum wage. यहाँ पे उसका वायलेशन धड़ल्ले से होता है. And I can give you so many examples. In fact, हमारे पास आज के स्टडीज में ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं. So moving on. तो this is a starking contrast that you will see in gig economy, at least in gig workers in India versus abroad. Especially senior citizens जब gig workers बनते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है. So the highlight for the evening that I'd like to share with you all is the immediate scale and momentum to frame, policies and human stories. This is something जहाँ पे ये gig economy आज के डेट में इतनी ज़्यादा flourish, अगर हम, if I can use the word flourish, it is not flourishing because it's a very lucrative market, or it's a very, of course it's a lucrative market for the business owners, but is it a lucrative option for one who is doing it? The answer is no. Sometimes it is the only choice that they are left with to meet their survival requirements. So this it is as simple as that. And इंडिया में ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है. यू हैव ऑलरेडी सीन, आई हैव स्पोकन ऑफ द नंबर्स कि किस तरह से नंबर्स में हमको धीरे धीरे राइज देखने को मिल रहा है. बट अदर देन दैट ऑल्सो वी डोंट हैव दैट मच ऑफ एम्प्लॉयमेंट. that's the fact, to be very honest. Okay, we'll move to the next question or the next point of discussion tonight. History and evolution. अगर हम history and evolution of gig work के बारे में, gig culture के बारे में बात करें, तो ये शुरू कहाँ से होता है? early start 2013-2017, जैसे मैंने बताया, ये शुरू हुआ था with ride hailing. Ride hailing is basically your Ola, Uber, and then food delivery entrance जो भी धीरे धीरे आने लगे. वहाँ पे हमको the phase one, this was the phase one, between 2013 to 2017, where we started seeing the culture of gig picking up, or it was the foundation of gig was getting built. Let me put it that way. phase 2 आता है कोविड के टाइम पे, जब अक्रॉस इंडिया हमने बहुत सारे जॉब ले ऑफ्स देखे. वो अभी भी है, इट इज़ स्टिल प्रेवलेंट. मे बी आवर नेक्स्ट लाइव जब हम करेंगे, इट कुड बी ऑन द present work culture that we have in private organizations, private companies. But we'll see what our next topic will be. But for tonight, we are discussing this. Phase 2 था COVID के टाइम पे जो accelerated growth हमको देखने को मिला in gig economy, gig workers में, basically between 2019, 2020, 21 वाला जो phase था, right? That was the pandemic phase. What happened? Pandemic shock. It dislocated from formal employment. Formal employment यानी कि हमारा जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल एम्प्लॉयमेंट टाइप है, वो वहाँ से बहुत सारा डिसलोकेशन हमको देखने को मिला. नाउ यू हैव टू सर्वाइव. यू डोंट हैव अ जॉब इन टुडेज
in today's economy, not having a job is not an option. If you want to stay alive, if you want to survive, then aapko you have to continue to earn, right? So gig was one place jahan pe logo ko employment milne laga. And let me also tell you that this was one time when मनरेगा ने भी काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट दिया था. मनरेगा के स्कीम में काफ़ी सारे टीचर्स ने 100 दिन की जो नौकरियां होती थी उनको किया था, बिकॉज टीचर्स वर लेड ऑफ, स्कूल्स बंद हो गई थी. लॉट ऑफ टीचर्स, लॉट ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, दे हैड टेकन अप टू दिस गिग कल्चर, जहाँ पे दे हैड mode of survival continued through whatever they could earn from the gig culture. This was phase 2. और यहाँ से जो boom start हुआ of the gig economy, that now has expanded to 12 million. Right? And speaking of the hiring alone, it is close to 92% year-on-year growth पे इसको देखा जा रहा है. Phase 3, scale and formal recognition हो गया from 2022 to 2025. Recognition of the gig working or the gig economy का recognition हुआ. It's not the recognition of the employees who are working there. अभी भी they have to struggle for their basic rights of employment. Right? So we are going to talk about that. तब तक स्मार्टफोन का यूसेज बढ़ चुका था. वी ऑल वर देन लो कॉस्ट, डेटा मेंटेनेंस एंड ऑल ऑफ दैट इज वेरी लो कॉस्ट. कंपनीज के लिए ये कन्वीनियंट वे था टू गेट पीपल ऑन फ्रीलांसिंग बेसिस, एंड यू गेट पेड एज पर द नंबर ऑफ projects you meet. By projects I mean the deliveries or the rides that you're able to fulfill in a day. वो accumulate होता है, and then they have a pay slab that gets disbursed every 15 days. और उसके भी कुछ pros and cons हैं. Pros तो नहीं कहूँगी, cons बहुत ज़्यादा हैं. We'll talk. I know I've been saying too much कि we'll talk because there is so much that you need to understand about this gig culture. So phase 3 is where it saw the maximum boom, right? India's internet and smartphone reach 100 of millions by 2025. Essential enables for scaling gig platform, right? जब से ये फोन का भी बूम हुआ, you would have seen कि इतने सारे platforms अभी हमारे पास available हैं, जो कि they are associated with these the gig services that we have in our country. अगर कहीं आपको जाना है, you have a cab at your disposal in just 5 minutes. कैब आती है, आप आराम से बैठ के चले जाओ. आपको कुछ खाना है, you don't have to step out, you don't want to go to a restaurant, you don't want to go anywhere. खाना आपके डोर स्टेप तक आ जाता है, groceries आपके डोर स्टेप तक आ जाती है. But what you are not realizing is we as consumers, we are denting the economy extremely adversely. हम ये तो रोते रहते हैं कि भाई जॉब्स नहीं है, there is a dearth of there is unemployment, यूथ को नौकरियां नहीं मिल रही, etc. But somewhere we are also adding to the cause. Imagine कि आपके घर के पास जो किराने की दुकान है, that's been in existence for years, right? आपको सब कुछ के लिए शायद 10 मीटर जाना पड़े या फिर उससे भी कम. Yeah, you just have to step outside your house and you can buy something. But आप उस टाइम को सेव करने के लिए you are just using your phone or you're just using your phone as an option to order something that comes and gets delivered at your doorstep. आप दो बार नहीं सोचते कि आप जो चीजें एक प्लेटफॉर्म से ला रहे हो, एक तो आप प्लेटफॉर्म फी देते हो. There's a platform fee included, which most of the times we overlook, right? Because हमारे लिए कन्वीनियंस और कंफर्ट इतना ज़्यादा मायने रखता है कि हम कहीं ना कहीं इस एक्सप्लॉयटेशन को हम खुद ही इसको बढ़ावा देते जाते हैं. I'll give you a very classic example. Of late, I have noticed, I also have these apps, and I will not shy away from accepting कि कहीं ना कहीं मैं भी इसको इस exploitation में I am also a big contributor by using these kind of platforms. Platforms गलत नहीं है, to be very honest. Platforms are not wrong, but the way these platforms are being used by consumers, or the way the convenience has been made available to the customers, to the consumers, ये एक economy को dent तो कर ही रहा है, but हम कहीं ना कहीं we are giving these opportunities to these employers to come up with new strategies जहाँ पे पूरा penalty
अगर आप देखो, इट इज़ नॉट अपस्ट्रीम, वो डाउनस्ट्रीम में ज़्यादा उसको वो ज़्यादा उसका इम्प्लीकेशन आपको देखने को मिलता है. डाउनस्ट्रीम इज़ पीपल हु आर योर डिलीवरी एजेंट्स, योर डिलीवरी पार्टनर्स. उनको जो सफरिंग करनी पड़ती है, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ आवर कन्वीनियंस. एग्जाम्पल, मैंने बोला था मैं एग्जाम्पल दूंगी. सो द एग्जाम्पल इज द न्यू ऑप्शन दैट आई हैव सीन इन द फूड डिलीवरी एप्स, जहाँ पे अभी एक ऑप्शन आता है कि आई थिंक इट्स सुपर फास्ट डिलीवरी या कुछ है द टर्म दैट दे यूज, एंड योर ऑर्डर विल गेट डिलीवर्ड इन 10 to 15 मिनट्स, या फिर जो भी सबसे कम टाइम होगा. लेट्स से द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डिलीवरी अगर 40 से 50 मिनट का है, तो अगर आप सुपर फास्ट डिलीवरी को एज एन ऑप्शन चूज करते हो, वो 10 से 15-20 मिनट और कम कर देता है. गुड, इट इज एक्सट्रीमली कन्वीनियंट फॉर पीपल लाइक अस. भाई 40 मिनट तक क्यों वेट करें, 10 मिनट में सामान आ जाए तो बहुत ही बढ़िया. वी वॉन्ट एवरीथिंग लाइक इंस्टेंटली फास्ट, एट जेट स्पीड. हमको सब कुछ चाहिए द मोमेंट वी वॉन्ट इट. वॉट वी फॉरगेट इज द राइडर हु इज गोना ब्रिंग योर प्रोडक्ट या फिर योर डिलीवरी, उसको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उसके बारे में हम 2 बार नहीं सोचते. हम 10, 20, 50, 100 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे. भाई महीने का आप 100 रुपए मुझसे ले लो, लेकिन मैं 10 मिनट में मुझे डिलीवरी चाहिए. वेन एवर आई एम डिलीवरिंग आई नीड इट विद इन 10 minutes, 15 minutes और द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. बट वी डोंट वॉन्ट टू टेक द पेन कि भाई अगर मैं जानती हूँ दैट आई एम रनिंग लेट और आई नो दैट आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ समथिंग जो मुझे शायद अगले 1-2 घंटे में मुझे चाहिए होगा, इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग इट वे इन एडवांस, I'd वेट फॉर द लास्ट मिनट, और फिर मैं वो पूरा प्रेशर ट्रिकल डाउन करती हूँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑन द डिलीवरी पार्टनर एज अ कंज्यूमर. एंड इससे बेनिफिट होता है डायरेक्टली टू द प्लेटफॉर्म्स. उनको एक्स्ट्रा पैसे आप देते हो टू गेट दीज कन्वीनियंसेस. उसके बदले में एक जो डिलीवरी पार्टनर होता है आपका, उसके ऊपर प्रेशर रहता है कि भाई 10 मिनट में अगर देना है मतलब देना है. 10 मिनट से अगर 11वां मिनट हो जाता है, 12वां मिनट हो जाता है, 15वां मिनट हो जाता है, वॉट एवर देयर ग्रेस पीरियड इज, उसके बाद उनको पेनल्टी लग जाती है. लेट मी टेल यू दिस, अगर आप बात करो ऑफ द मिनिमम वेज जो कि बाय लॉ मिलना चाहिए एक गिग वर्कर को पर डे का, अगर वो मिल भी जाता है, उसमें से द रेस्ट ऑफ द कॉस्ट is it's adjusted from what they earn, including transportation के जो charges होते हैं, या ferrying, getting your product, ferrying here and there, पेट्रोल के जो चार्जेस होते हैं वो भी उनको उसी पैसे से देना पड़ता है. They don't get anything over and above. If you don't believe me, you really will have to wait and watch the episode that we are trying to bring to you, जहाँ पे हमने ये investigative journalism की है, और आगे भी थोड़ा हम उस पर काम कर रहे हैं to make it more robust for you. Please watch it, क्योंकि ये अभी तो मैं बोल रही हूँ, this is the second hand information to you. But when you watch that episode, you will know what exactly these people go through. मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या इंटरव्यू के टाइम पे मुझे क्या सुनने को मिला था when I was having this interview. So without taking the name of the platform, I'll tell you the crux, जो question मैंने पूछा था, that was around कि उनकी earning के बारे में, कैसे उनकी earning होती है और उसका impact क्या होता है. So first of all, जैसे मैंने बताया, any kind of transportation charges वो उनके ही जो उनका जो pay आता है उसी में से adjust करना पड़ता है. So let's say if you're earning around 1000, चलो उनकी अर्निंग इतनी कम नहीं होती है, लुक्रेटिव देखने में बहुत लुक्रेटिव लगता है, राइट. ऑफ व्हाट आई हर्ड, द नंबर्स दैट द गिग वर्कर कोटेड टू मी, उनको हर 15 महीने में उनको एक पे आता है, राइट. सो द पे इज आई थिंक 12.5 के आसपास कुछ उनको आता है. सो 12.5 नाउ, 12.5 लेटर, सम्स अप टू 20 grand, yeah, I guess. So the point is, उनको जो पे आता है, that from that they have to take care of the petrol, they have to खाने पीने का कोई उनको नहीं दिया जाता है. They don't have an office where they can wait when they do not have a job at hand.
पेमेंट उनको आती है तब जब वो टास्क अकम्प्लिश करती हैं. द वर्स्ट पार्ट इज इफ यू आर अनवेल, कोई सिक लीव वगैरह का इतना फंडा नहीं होता है, हालांकि कवरेज मिलता है, मेडिकल कवरेज मिलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द गिग वर्कर्स, स्पेशली फीमेल गिग वर्कर्स, उनको उनके इंश्योरेंसेस के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं होता है. किस तरह से इंश्योरेंस को क्लेम किया जाता है उसके बारे में नहीं पता होता है. सो द नॉलेज दैट दे हैव अबाउट देयर ओन एम्प्लॉयमेंट राइट्स इज अबिस्मल. ट्रेनिंग में उनको इतनी डिटेल्स नहीं बताई जाती है. अनफॉर्चुनेटली दे हैव समथिंग कॉल्ड एज, कुछ कुछ एक होता है उनका एम्प्लॉयमेंट कार्ड टाइप का जो उनके ऐप में ही होता है, जहाँ पे उनके इंश्योरेंस नंबर्स या फिर बाकी सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं, लेकिन उसको किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, कब उसको यूज़ करना चाहिए, वो एजुकेशन उनको उन तक इतनी उनको नहीं होती है. दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज. नंबर 1. नंबर 2, अगर कोई अनवेल है, सिक लीव तो नहीं है, अगर आप लीव ले रहे हो ऑन अ मंडे, the pay for that day will get deducted, right? You don't get paid for that day, basically. Not deducted, but you don't get paid for that day. If you are taking a leave on a Saturday or a Sunday, which is a weekend, तो एक दिन की जगह आपको 2 दिन का पे नहीं मिलता है. Yeah. You have to compromise without pay for 2 days. If you're taking a leave on a weekend, Saturday or Sunday. अगर कस्टमर किसी तरह की बैड रेटिंग दे देता है, बहुत ज़्यादा बैड रेटिंग हो जाती है. I literally, she broke down during the interview, the gig worker, she literally broke down. She was in tears because she is the only breadwinner for the family. ऊपर से उसने ये भी बताया कि 12,500 15 दिन में मिलते हैं, लेकिन उस 12,500 में 4 से 5,000 शी हैज़ टू कीप असाइड फॉर द पेट्रोल कॉस्ट. अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेगी, देन शी विल नॉट हैव अ जॉब टू कीप. वो पैसा उनको एडिशनल नहीं मिलता है. द नेक्स्ट वर्स्ट पार्ट इज इंश्योरेंस के बारे में उन लोगों को नॉलेज नहीं होती है. इवन वर्स, अगर लेट अराइवल हो गया एंड द कस्टमर हैज कंप्लेन्ड, या फिर उन्होंने नोटिस कर लिया, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली ट्रैक्ड. That's what I was also told, that every moment of there is tracked as long as they are, which is a good thing because tracking should happen क्योंकि इनका job इतना risky है. It's good that they are constantly being tracked by the organization. तो चलो ट्रैकिंग तो ठीक है, बट इफ दे आर अराइविंग लेट उसका भी पेनल्टी भरना पड़ता है. कस्टमर ने कोई नेगेटिव फीडबैक दे दिया, उसका पेनल्टी भरना पड़ता है. अगर उनकी स्टार रेटिंग 5 से कम आ जाती है, उसका भी पेनल्टी इन लोगों पे लग जाता है. सो दे डोंट अर्न एज मच. देखने में सुनने में अच्छा लगता है कि अ गिग वर्कर गेट्स 20 to 25,000 a month. These are mere numbers. Please, if you don't believe me, go and interact with a gig worker. You will know what the ground reality is. And I'm telling you that this was not just one of interviews that I had with a gig worker. मैंने सैकड़ों ऐसे लोगों से बातें की हैं जो गिग वर्कर्स हैं. ड्यूरिंग whenever I'm traveling to office, if I'm taking a cab to work, मैं बात करती हूँ. ड्राइवर्स जो चलाते हैं, जो जिनकी अपनी गाड़ी नहीं होती है, दे आर बेसिकली पेड ड्राइवर्स जो किसी और के लिए गाड़ी चला रहे होते हैं. किसी और की गाड़ी है या फिर ओला उबर की गाड़ी है और ये लोग चला रहे हैं. ओला उबर एनी प्लेटफॉर्म, ये लोग गाड़ी चला रहे हैं. देन दे ऑल्सो गेट पीनलाइज्ड. ओला में देर इज अ for consumers and customers, it's a convenience. Yeah, I think it's called it's more like an option that you pay later. So Ola gives you some credit जिसको आप यूज करके आप राइड ले सकते हो, and then you will have to pay it later. कुछ रहता है, that's the calculation. But इसका इम्पैक्ट पड़ता है ड्राइवर्स पे, क्योंकि ओला पेमेंट डिले कर देती है. पेट्रोल का खर्चा ड्राइवर को देना पड़ता है, और ये सब एडजस्ट होता है फ्रॉम द अर्निंग्स दैट दे गेट. This is why I had said, if you all remember last week जब हम live कर रहे थे, I had mentioned that the average household earning, right, in any Indian family ranges between 15 to 25,000 tops. आज के डेट में 25,000 में, 20 से 25,000 में घर चलाना is very difficult. Let's agree.
अनलेस यू ओन योर ओन प्रॉपर्टी, सब कुछ आपका है, 25,000 आप फिर भी मुश्किल से मैनेज कर लोगे. अदरवाइज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दैट इज वेयर द इन्फ्लेशन हैज रीच्ड टुडे. ओके, वी आर ऑलमोस्ट एट द टॉप ऑफ द आवर. 2 मिनट बचे हैं लाइव खत्म करने के लिए मेरे पास, लेकिन आई हैव सो मच टू डिस्कस. I'll perhaps move on. I'll quickly move on. But these are some of the things that we should be mindful of. हमने ना सोचना बंद कर दिया है. We have become extremely self-centered, not selfish, but self-centered. हम दूसरों के बारे में कम ही सोचते हैं आजकल. हमारी convenience is the topmost priority for us these days. मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ट्रीट द गिग वर्कर्स ऑल्सो एज ह्यूमन बींग्स. 4 कदम आप नीचे चले जाएं या फिर गेट के बाहर चले जाके आप उनके हाथ से अगर अपना डिलीवरी ले लेते हो तो आप छूटे नहीं हो जाओगे. प्लीज डू दैट instead of expecting them to come and deliver exactly at your doorstep. That is too much to ask for. Well, I just have one person listening to me now. Top of the hour, as I said. I think we'll close the live here. There's a lot. I think we'll have another round of discussion on the gig economy क्योंकि इसके ऊपर भी बात करना उतना ही ज़रूरी है. So next week we are not going to have the live because we have a literature festival happening in my city and I'm too keen. 3 दिन का लिटरेचर फेस्टिवल होता है एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दिस पार्ट ऑफ द ईयर एवरी ईयर. सो हम लोग मैं और मेरी पूरी टीम वी आर गोइंग टू अटेंड द लिटरेचर फेस्टिवल. हम कुछ क्लिप्स एंड ग्लिम्सेस आपके लिए शेयर करेंगे फ्रॉम द लिटरेचर फेस्टिवल इज वेल. बट दैट सेड, नेक्स्ट संडे वी आर नॉट गोइंग टू कम लाइव. माई सिंसियर अपॉलॉजीज फ्रॉम कॉफी कॉमर्स एंड कहानियां फॉर दैट, बट विल मेक इट अप टू यू द वीक आफ्टर नेक्स्ट. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, प्लीज कीप वॉचिंग आवर स्टोरीज एंड कॉफी कॉमर्स और कहानियां का साथ दीजिए. हमारी बुलंद आवाज़ बनिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को देखिए और हमारी आवाज़ को और आगे पहुंचाइए थ्रू लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस टुनाइट एंड विल सी यू well the week after next. Hope you all have a wonderful rest of the evening. Thank you. Good night.